हाय फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अनबॉक्सिंग तो नहीं, बट आई हैव बीन यूजिंग अ मैकेनिकल कीबोर्ड फ्रॉम cosmicByte फॉर अ मंथ नाउ। तो उसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसके साथ, और कैसी क्वालिटी है, साउंड कैसा है। बेसिकली ये ऑटिमा ब्लू स्विच वाला कीबोर्ड है, cosmicByte फायरफ्लाई GB16, और ये 10 कीलेस डिज़ाइन में आता है, मतलब नमकीन नहीं होगा इसमें। सो मैं इसका अभी आपको आवाज़ सुना देता हूँ एंड देन विल टेल यू द क्वालिटी। सो दिस इज़ द कीबोर्ड हियर, 10 कीलेस डिज़ाइन, फुल RGB एंड फुल एंटी कोस्टिंग कीज़। ठीक है, तो फुल एंटी कोस्टिंग मतलब ये सारे की को रीड करेगा, आप एक साथ दबाएंगे। पहले इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। अब मैं आपको इसका स्विच पे दिखा देता हूँ। ये इसका स्विच है, ऑटोमे ब्लू स्विचेस, और ये इसके की कैप्स हैं। की कैप्स चेंज हो सकते हैं। साउंड अच्छा है, वायर ब्रेडेड वायर में आता है इस टाइप के। ठीक है, ब्रेडेड वायर है, स्ट्रॉन्ग है। साउंड्स काफ़ी अच्छे हैं, कलर्स अच्छे हैं, फुल एंटी घोस्टिंग है, और क्वालिटी प्लास्टिक है, लेकिन क्वालिटी प्लास्टिक है, लेकिन इसका क्वालिटी काफ़ी हैवी है, मतलब प्रीमियम फील होता है। ऑन अमेज़ॉन 2500 का लिस्टेड है, और कभी 2000 का भी मिलता है, तो यू कैन चेक इट आउट। क्वालिटी अच्छी है, 10 कीलेस है, लाइटिंग, फुल RGB, एंटी घोस्टिंग, और टाइप करने में फील एंड फीडबैक जो प्रेशर है वो एडिक्वेट है, तो यू विल नॉट फील एन्जॉय टाइपिंग इन दिस। होप यू दिस इज़ क्वाइट गुड फॉर यू। मैं इसका आपको बॉक्स दिखा देता हूँ, कैसे बॉक्स में आता है। सो दिस इज़ द बॉक्स, फायरफ्लाई GB16, RGB लाइटिंग इफेक्ट्स और की एंटी घोस्टिंग। सो यही था। Hope you liked it. Please comment down below and subscribe to the channel. Share it with your friends for more intriguing content and good technological feats. Thank you so much for watching. Bye. Hello guys, welcome back to unboxing of yet another video. और आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टफ है to see today, and this is Hola biking gloves. So this is from Studs. दिस इज़ द ब्रांडिंग, दिस इज़ द सिंबल, और यहाँ से ओपन होता है। ठीक है, दिस इज़ प्रिटी मच बजट कैटेगरी बाइकिंग ग्लव्स, बट क्वाइट होल्ड्स क्वाइट अ वैल्यू फॉर द मनी इट टेक्स। सो ये ऐसे है, यहाँ पे आपको एक रबर प्रोटेक्शन नकल गार्ड मिल जाता है, डेट इज़ नॉट वेरी हार्ड। दिस इज़ एडिक्वेट एंड वॉन्ट फील हार्ड टू योर रिस्ट। यहाँ पे प्लास्टिक, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक इन द फिंगर प्रोटेक्शन, तो अगर आप कभी गिरते हैं तो एब्रेशन से बचाने के लिए। सो दिस इज़ क्वाइट गुड। यहाँ पे एक रबराइज्ड मटेरियल है। द अपर पार्ट, द क्लोथ और द मटेरियल ऑफ द फैब्रिक इज़ मेशी, काइंड ऑफ मेशी, बट इट्स लाइक काइंड ऑफ थिक, मतलब बहुत जल्दी फटेगा नहीं। सो इट विल प्रोटेक्ट टू समहाउ, और ऑन द कॉन्ट्ररी इट वोंट फील वेरी स्वेटी इनसाइड, बिकॉज हवा पास होगा, ये मेस भी दिया हुआ है साइड में। ऑन द इनसाइड इट्स लाइक अ वेरी सॉफ्ट क्वालिटी, इट्स लाइक काइंड ऑफ वेलवेट हियर, एंड हियर एक रबर प्रोटेक्शन दिया हुआ है पाम प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ पे भी एक एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल दिया हुआ है, फैब्रिक ही है, बट इट विल प्रोटेक्ट समहाउ। मैं हाथ में डाल के दिखा देता हूँ। सो आई गॉट स्मॉल साइज फॉर मी एंड इट फिट्स रियली वेल। जो भी प्रोटेक्शन है, चाहे नकल प्रोटेक्शन हो गया या फिंगर प्रोटेक्शन हो गया, जो हार्ड प्लास्टिक भी है,
इट्स नॉट पॉइंटी, वो आपको हार्ड फील नहीं होगा अंदर कि अनकंफर्टेबल कर रहा है या फिर आपको इरिटेट कर रहा है. तो व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक इट वोंट गेट्स इन योर वे, और जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब नहीं करेगा. इस बजट में आई थिंक बेस्ट यू कैन गेट इज दिस वन. आई कैन नॉट फाइंड एनीथिंग बेटर इन दिस बजट. और ये आपको 500 to 800 रुपीज़ में मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द डील्स. सो इस बजट पे इससे बेटर ग्लव्स आई डिड नॉट सी, आई कुड नॉट फाइंड. हाँ, अगर आप इससे थोड़ा बजट बढ़ाते हैं, आप 1500 यू कैन गेट रॉयल एनफील्ड ग्लव्स. एंड देन इफ़ यू आर और उसके बाद तो बहुत सारे, इफ़ यू गो मोर अप यू गॉट BBG's ग्लव्स. सो दिस बजट पे दिस इज़ क्वाइट अ डील, क्योंकि इट गेट्स सम प्रोटेक्शन फॉर द सिटी राइडिंग. अगर आप हल्का करते हैं तो इट विल प्रोटेक्ट योर आर्म. ऑन द अदर हैंड इट्स कंफर्टेबल इनफ टू राइड एंड लुक्स वाइज भी बहुत सही है. सो this is the best recommendation I can get if you are looking something in this price range. So this is the gloves you should go on. So please comment down if you find anything else apart from this. I find this one pretty good, so yeah, I'll share a ride review of it. But while I'm using it, I have quite a small ride with this, and this is very comfortable. Okay, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Hola. Hello guys, welcome back to the channel, and this video will be unboxing series. This is what we have currently. This is a Zebronics laptop stand that goes by the name laptop stand Zeb NS2000. It's a aluminium built completely, and by specs it looks same. The cost price is 1999 as mentioned in MRP, but you can get it at quite lower cost depending on the sale and the discount available. So without wasting any other time, let's start it with the unboxing and review. The color here that I got is gray silver one. It comes in black also, that's your choice. Okay, let's open the box in the camera frame. Okay, what's other than this? Okay, the box is empty, nothing there. Dana. This is the Zebronics batch. Pretty good, feels pretty good. Velvet type का है. So yeah, like feels premium quality. And here is our laptop stand. Built Zebronics branding, Zeb NS2000 KS, aluminium built. These are probably for angle adjustment. Yep. And how do you open this? So this goes like this. Ta-da! This is our laptop stand. So this is our laptop stand. This is the maximum width it goes. और हाँ, यहाँ पे 2 रबर के ग्रिप्स हैं टू होल्ड द लैपटॉप. इधर सो इट विल बी स्टिंग देयर. उसी तरह पीछे भी रबर के ग्रिप है, सो इट होल्ड्स इन द प्लेस. अब एंगल एडजस्टमेंट देख लेते हैं. आप इसे उठाते हैं, ये 2 इसके रॉड्स हैं जो आपको जितना एंगल चाहिए उस पर आप सेट करके इसको लगा सकते हैं. ओके, लेट्स डू दिस. या एंड व्हेन इट I'm pushing it pretty hard and it is strong. It feels strong. जो weight आराम से ले लेगा. ठीक है, build अच्छा है. When you're done, when you're traveling, you're going out, you just keep it and it's like this small, easy to carry. And when you're using it, quite a deal I guess, like very useful. क्योंकि आप what happens is when you're putting in a table in a laptop और कीबोर्ड अगर नीचे है और आप कीबोर्ड माउस यूज़ कर रहे हैं तो सीट हाइट एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो लैपटॉप स्क्रीन होती है उसको आपके आई लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है, और जो आपका कीबोर्ड माउस है वो आपके आर्म रेस्ट के लेवल पे होना चाहिए. तो ये जब आप लैपटॉप यूज़ करें, वो डेस्कटॉप पे तो मॉनिटर एडजस्टेबल होता है, लैपटॉप पे पॉसिबल नहीं होता, तो इससे थोड़ी हाइट बढ़ जाती है. एंड यू कैन कीप द कीबोर्ड माउस डाउन, सो वो आपका पोस्चर बहुत अच्छा बना रहता है. और इसकी एल्यूमिनियम की क्वालिटी भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है. does not feel loose or weak or something.
सारा well in place है, doesn't like what to say wobble or something. तो हाँ, this is about Zebronics. और आपको let me show you how does laptop looks on it. So this is my laptop currently resting on the Zebronics stand. Let me show you. Yeah, so this is how it looks. Hello folks, welcome back to one more unboxing video. Or today we have a very interesting thing to see, to unbox and to review. So what is it? It's a hearing device. It's a headphone, Sony WH-CH710, and this is the box that it comes in. Front में wireless noise cancellation NC branding, 35 hours standby time with Bluetooth. Here are some information. These are the features, these are the button specifications. This is the box it comes in. Okay, let's keep going and open it. Okay, box के अंदर एक और cardboard box है. Let's open that too. Okay, and this is how it comes. These are the wires in the box, charging cable and 3.5mm audio jack. Keep it aside. This is the headphone itself. This is just a cover. ऊपर से देख के तो all plastic build. जो ये adjustment है, this is metal. बाकी सब plastic है. This is the foam. This is the covering. Ear cups का ear space काफ़ी बड़े दिख रहे हैं. And the plastic here is not very premium, I will say, but yeah, it's good quality if you're paying 14,000 rupees for it, if you're not in discount. Okay, और ये इसका overall look है, 360 देख लें. Let me see what are in there. So ये है power button, if I can focus. Power button, USB type C for charging, 3.5mm jack for audio input. There is a secondary mic for noise cancellation, NFC symbol. This is also getting NFC, so you can connect it with NFC. यहाँ एक छोटू सा LED है, that is for the power light. इधर आ जाते हैं. This is power, volume up, volume down keys. This one and the middle one is used for controlling the operation. Like if you're hearing music, double tap will change forward, triple tap will go backward, single tap will pause, and also used for picking up and cancelling calls. Here is an NC button. You can on noise cancellation and ambient sound. Here also one mic. That's all. Here ear cup is quite big. It does not fold out inside, but ये ऐसे straight हो जाता है. और this is good. Clamping force is also nice. It's not very hard. It's like quite in the sweet spot where you neither very uncomfortable, not is very loose. Or audio quality that I have tested of it is pretty smooth. I'll not say it's like top class or it's like flagship like audio, but if you're looking something which should be easy on ears, which should be comfortable, that you should wear for hours, 2 hours, 3 hours continuously, and it should not hurt much, so this is the one to go. Because ear foam is very soft, the space here is very good. Also the clamping force is just adequate, not very tight, not very loose, and the extension bar is good. Quality is pretty much quite a premium. It should be like, it should feel more premium, because what is the competition is getting from Skull Candy and Sennheiser, the build quality there is like feels a bit more premium than what this is feeling. But yeah, you will not be disappointed. It's no lose. I guess you won't lose if you choose this, because this is comfortable. Audio quality is good. Call quality is very good. Call quality, you won't have any distortions or mic issue. Apart from that, audio quality for music, for songs, for videos, for movies, it's pretty much get your job done. So this was Sony WS710. And yeah, it feels pretty good. Thank you so much for watching. Please like and subscribe to the channel and keep supporting. Holla.